All right, everybody, we are live and let's start off with chapter number 3. So, we are Alhamdulillah officially done with the first two topics, chapter number 1 and chapter number 2. And today we're going to be starting off with this very kind of boring but engaging, super long type of chapter. So, perhaps this might be the longest topic that exists out there for your, what do we call it? Cambridge IGCSE computer science examinations. And the topic is hardware. So we are going to be studying what? Hardware. So I was just looking at, there was this small problem कि जो मेरे notes हैं उसके अंदर पता नहीं लगता when does the chapter end. So we are going to be having one introductory page like this ताकि अगर बाद में आप लोग कभी notes को go through करें, so you guys should get a very good idea that the new topic just started off. So let's color this a bit like this, and let's also color it at the bottom so that it's like a bit of a theme page kind of thingy. And then let's start off from the very next page. So this is chapter number 3. The name of the topic is hardware. So we are basically going to be learning about hardware, your computer, the basic mechanism and the software used within the computer. The software has a different topic, by the way, but the main components used within the computer, and apart from that, we're going to be studying about input output devices, printers, and all that stuff. So it's chapter number 3 of your very Cambridge examination, whatever IGC is your O-level exams you are appearing in. So let's start off with the very first thing. So whenever you go and buy a computer, let's say for instance, Rayan wants to buy a new PC. Chapter number 3 is not hard. So Rayan just said that I heard that chapter 3 is very hard and boring. The thing is, chapter 3 is not hard. So it's not hard, remember. It is boring. I agree with that. It is type of boring because of the fact that it is super long. It's not hard because the big issue right now here is that teachers tell kids to memorize a lot of stuff in chapter number 3. The reality is that you don't need to memorize a lot of stuff except for the few things that you need to, जो कि हम discuss करेंगे. A lot of the things are there in the book and the course just for your own understanding. So like अब आप अगर अपनी book open करते हो, उसके अंदर you are asked to know the working of input output devices. So you should know how a mouse works. How a mouse works. यार एक तो मेरा गला भी खराब है, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन. बट अब देखो आपके बुक के अंदर इसके ऊपर एक बहुत लंबा पैराग्राफ है, हाउ डज अ माउस वर्क. बट एग्जामिनर ने अपने कोर्स स्पेसिफिकेशन सिलेबस में मेंशन की है दैट अ किड डज नॉट नीड टू नो दिस. Now, the fact that basically kids believe that chapter number 3 is very hard is just because of the fact that teachers क्या करते हैं, they tell kids, bro, you need to memorize the whole thing. You need to know how a mouse works. You need to know how a microphone works and all that stuff. But none of that is in your course. So, inshallah, I will make sure कि आप लोग को, I will try my best, inshallah, कि हम chapter 3 को full slow break down kare, and we learn, not only learn but also understand the main reasoning behind what we are studying alongside those school examples ताकि आप लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आए. So back to the main course thingy. We were discussing how Rayan maybe inshallah gets, Rayan, you gave your O2 exams right now, right? So inshallah Rayan, let's say, gets 3 A star in his O2, and he's like, okay, oh, not oxygen O2, my bad. It's O2, IG2, O-level examinations. Okay. And then Rayan is like, okay, I need to get myself some treat from my parents. I got 3 A stars. I'm so good, mashallah, mashallah. And then he goes to his father and he's like, I need a new PC because apparently Rayan loves playing games. And so when you love playing games, you need to get a very strong PC. And so Rayan goes now to Saifullah. Saifullah, in this case, let's say it's Saifullah Atiq. Saifullah Atiq is the computer dealer. Okay, he's a dealer. This is his shop. Okay, this is the shop. ये counter है, सही है. And यहाँ पे Saifullah खड़ा है. And here comes Rayan, and Rayan is like, I need a very good PC. And then the very first thing which Saifullah might be asking is that what type of CPU do you want in your computer?
What do we mean by CPU? CPU basically अगर आप लोग कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर बिल्डअप करते हो, so you would have heard these terms: Core i5, Core i7, Core i9, Core i3, or maybe if you're with the Ryzen AMD company wale thingy, so you can go with Ryzen. I don't know the exact name of Ryzen cards. Check out kar lete. Ryzen card. Okay, Ryzen 5 5600X. Maybe this is some sort of processor and CPU. So let's write that Ryzen 5 5600X. So अब जब हम ये चीजें करते हैं ना, these are the very basic specification. Usually when non-CS guys go and buy a laptop for themselves, and when you ask them the specifications and something, they won't be talking about the RAM or the hard disk space or the graphic card. They're like, I have a Core i7 laptop with me or a Core i9 laptop with me. It is 13th generation Core i5. So what does this Core i5, Core i7, Core i9 means? These are basically your CPU. अब CPU क्या होता है? That is the very first thing we need to study. CPU is the short form for Central Processing Unit. Processing Unit. So if I can, in very simple alphas, say that CPU is the brain of your computer. It's the brain of your computer. Why is it the brain of your computer? Because without CPU, you cannot ensure that your computer chale. Because all the decision making type of thing is all बाकी चीजें तो वो सारा CPU नहीं करना है. Great to know सैफुल्ला, आप ही क्लास में आ गए हो. Great. So अब CPU के अंदर what is CPU? हमने ये तो पढ़ लिया कि CPU is type of the brain of your computer, and it's this a short form for Central Processing Unit. This is not, I guess, in your course जो कि आपसे direct question पूछे जाएंगे कि what is the long form of CPU, but you should know कि if someone asks you, bro, you have studied CS, what is CPU? So you should be able to tell them CPU is Central Processing Unit, and in very simple alphas, if I want to explain it to you who haven't studied CS, it is the brain of your computer. सही है? So आज के बाद जब भी you hear the word Core i5, Core i7, Core i9, do know I'm talking about the CPU or the processor. सही है? अब CPU क्या होता है? CPU is basically installed within your computer. How is it installed? It's like an integrated circuit. Integrated circuit. So अब इस तरह होता है, if you someday open your laptop या फिर your computer या whatever, so let's say this is the PC which Rayan got himself. Say this is the case. This is the case. Okay, and इसके अंदर maybe this is the hard drive, perhaps this is the power supply. You got some RGB fans, these are fans, and we got the hard disk, and then we got the graphic card. Okay, he got like himself a RTX 5070 maybe, and then at the center he has something जिसको हम बोलते हैं processor. So the processor is basically the CPU in this case. सही है? तो आपका CPU and processor क्या होगा? आप यहाँ पे बोलोगे Core i5, Core i7, Core i9 या whatever. तो वो यहाँ पे ना आपके एक chip लगती है. So when you buy a Core i5, wait, let me just show you guys a picture of what a processor is. CPU. एक second. अब यहाँ पे मैं Core i7 लगा लेता हूँ. Let me get you guys what do I mean by this chip P. यहाँ पे Core i7 chip. So this integrated circuit जिसको मैं बोलूँ ना, it is just this small. Yeah, this picture is fine. Let me take a screenshot. Control F4 and let me just. So this is from Daraz, by the way. Daraz पे बेच रहे हैं लोग. So अच्छी बात है. If anyone wants to buy it, so they can go check it out from there. So किधर गया? Screen. Oh, it's on desktop. So yeah. So just have a look at this, guys. This is what we call a CPU or a processor. सही है? इतनी सी चीज है यार. एक तो किधर लगाऊं? चलिए यहाँ पे कर लेते हैं. So this thingy right now, this very part is basically 4th generation Intel Core i7. अब ये जो इतनी सी चीज है, this is barely maybe अब ये AC के remote है, so the upper part this much. इतनी ये chip होती है, सही? And we just plug this chip into this very part up here on the CPU. So once you plug it, उसके बाद जो भी processing करनी होती है, ये सारा ये छोटी सी चीज करती है. And what is it? It is basically an integrated circuit. So what do I mean by integrated circuit? It's like a circuitry form of thingy which is integrated onto the computer. And
What is the responsibility of a CPU? So वो लिख लेते हैं. The responsibility of a CPU is the responsibility of a CPU is to execute and process all the instructions and data in a computer application. Discuss karte in just a moment. So the responsibility of a CPU is to execute, firstly, execute or whatever the word goes, and or process the instructions and data in a computer program. Instructions and data in a computer application. And data in a computer application. What do I mean by this? This basically means that when I say execution basically means that if I want to run some game, I may be required to do some sort of calculation, right? So if I open the calculator on my laptop right now and I'm like 10 plus 2 and I press the enter button, I should be getting 12. But ये 12 कहाँ से आया? Who made this calculation, everything? इसके पीछे the sole responsibility किसकी है? It's the responsibility of a CPU. So it is the responsibility of a CPU to execute. So he needs to conduct this, he needs to execute this instruction. अब ये instruction है. This is a type of instruction. Any action, any step, anything which leads to something is basically an instruction in terms of computer science. So if I'm like 10 plus 2, this is an instruction. अब इसको execute तो CPU ने करना है. What do I mean by processing? Processing mean कि अब देखो मैंने 10 plus 2 equals to कर दिया. It's not like 10 plus 2 ने directly समझ आ जाएगी. Like I know that it's 12. The computer will be like, okay, what is 10? Okay, 10 was something like 10101 maybe. What is plus? Plus is 0001. What is 2? 2 is 0001. And maybe let's say one up here, for instance, just to give you guys an example. सही है? So अब वो इस तरह करके इन चीजों को process करेगा, and then he will be like, okay, let's get a new binary which may be like this, something, this is 12 and now this is stored at this part. अब ये जो सारा process हो रहा है ना, getting the data, executing the instruction, processing all of these binary values, storing them at the new instruction place, ये सारा जो काम करते हैं ना, that is being done by your CPU. So for this reason, whenever you are trying to purchase a new PC, so like in this case, agar what do we call it? Rayan wants to get himself a new PC. Saifullah will basically be telling Rayan that if you are planning on playing newer games like the AAA game series, those newer generation games, so us case mein I will suggest that you should go with the latest generation Core i5, Core i7, or Core i9. If you have the budget, why not go with Core i9 14th generation? The only benefit is that it is the responsibility of a CPU to execute and process all these instructions, whether that's playing games, that's downloading stuff, that's maybe doing some graphics sort of work, or maybe इसको क्या बोलते हैं यार, ये जो rendering वाले काम होते हैं, या maybe editing, whatever. If you have a stronger CPU, this means that you are relatively going to be processing and executing instructions at a very faster pace. So आपकी responsibility of CPU क्या है? To execute and process the instruction. अब ये चीजें तो हमने कर ली. But CPU के अंदर ना, there are three main things as per your course. Okay, so it's not like might be सिर्फ यही तीन चीजें, लेकिन as per your course you need to be knowing these three things. So what's the very first thing? The very first thing जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, that is basically control unit. Now all of these things have a 1-line, 2-line definition या description जो कि आप लोग को याद होनी चाहिए. So what Rayan said at the start के, is this chapter difficult? अब it is difficult if you guys don't memorize these definitions. अब ये ऐसी चीजें कि इनके ना आपको descriptions आनी चाहिए. We're going to be discussing all of them. लेकिन before memorizing या learning the descriptions, it is very very important कि आप लोग को पता हो कि control unit होता क्या है. So control unit, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है ALU, and finally हमने पढ़ना है registers and buses. Very very simple and straightforward चीजें, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है. It may seem like a bit scary at the start, but once we discuss all the reasoning and all the execution steps that are out there, आप लोग कहोगे guys this is so easy. And when you need to memorize it, you'll be like यार ये तो मैं अपनी English में basically वो लिख रहा हूँ जो हमें सर ने बताया था कि ये काम ये करते हैं. So let's start off with the very first thing. Let's discuss ALU सबसे पहले. ALU. What is ALU? Sorry.
सो सीपीयू का तो पता लग गया ना, सीपीयू इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ इट्स एएलयू. एएलयू इज विद इन योर सीपीयू, सही है, या फिर विद इन योर प्रोसेसर, वट एवर यू से. अब एएलयू में ना एक चीज होती है, एएलयू इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. लॉजिक यूनिट. सो ये जो आपके एएलयू है ना, इसके अगर हम लॉन्ग फॉर्म करें तो इट्स अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट. अब एएलयू करता क्या, दैट इज समथिंग वी नीड टू स्टडी. अब अर्थमेटिक किसे कहते हैं? अर्थमेटिक रेफर्स टू योर डे टू डे, जो हम ये बोलते हैं ना कि आई एम डूइंग 2+2, तो ये जो प्लस, या फिर मैं बोल दूं 10-2, माइनस, या फिर मैं बोल दूं मे बी 5 × 2, तो ये जो आपके साइंस है ना, दीज प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और मे बी इफ आई ऑल्सो डिवाइड समथिंग 16/2, सो जो आपकी ये जो multiplication, yeah, these operators which you have na, operators, these are basically referred to as arithmetic. So matlab, if I'm doing arithmetic calculations, I'm basically dealing with operators, like I'm either adding stuff, or maybe I'm subtracting stuff, or maybe I'm multiplying stuff or dividing stuff. तो जब आपके arithmetic चीजों को हम refer out करते हैं ना, तो we are basically dealing with what? We are dealing with operators. So let me write it, operators. So the first thing you guys understood is that ALU deals with what? It deals with your operators. Operators में क्या आ गया? Plus, minus, multiply and divide. So when you want to perform some sort of calculation, जैसे हमने ऊपर discuss किया कि 10+2, अब 10+2 है, so the plus वाला part is an operator, which means arithmetic अब discuss हो रहे. So आपके CPU में जो ये plus वाला काम करेगा, that is being done by your ALU, right? And then उसके बाद आपके पास आ जाता है logic. Now what's logic? Logic is basically true and false वाली गेम, सही है. सो लॉजिक के अंदर आपके पास कंडीशंस आ जाती है. इन सिंपल अल्फाज आपको लॉजिक, इसके बाद लॉजिक गेट्स जब हम पढ़ेंगे, यू आर गोना गेट इट इन अ वेरी मच बेटर वे. बट फॉर नाउ जस्ट नो कि वी आर डिस्कसिंग कंडीशंस. व्हाट डू आई मीन बाय कंडीशन? आई मीन बाय कंडीशंस के लेट्स से अगर मैं एक कंडीशन सेट कर लेता हूं कि पावर ऑफ लैपटॉप. अब पावर ऑफ लैपटॉप की मैंने 2-3 कंडीशन कर सकता हूँ. आई कैन से एग्जैक्टली एंड और नॉट. हाँ बिल्कुल, अब हमने एंड और नॉट आर कंडीशंस. अब आप लोग को एंड और नॉट अभी समझ नहीं आएंगी, ये आपको बाद में अच्छे से समझ आएंगी व्हेन वी आर डन विद टॉपिक नंबर 10. इंशाल्लाह इसके बाद हमने वो करना है. सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट आफ्टर मे बी 2 टॉपिक्स के बाद इंशाल्लाह. वी आर गोइंग टू बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स P2 इंशाल्लाह. सो अब देखो, इफ आई एम सेइंग कि पावर ऑफ लैपटॉप सही, मतलब टर्निंग ऑफ लैपटॉप. अब इसके लिए मैं कंडीशन स्पेसिफाई कर लेता हूँ. क्या कंडीशन हो सकती है? चार्जिंग इज लेस देन 0, लेस देन 5% में भी. अगर लेस देन 5 हो गया, ऑटोमेटिकली बंद कर लो. या फिर मैं सेकंड कर सकता हूँ, आइडल फॉर मे बी 1 आवर. सो अगर अब 1 आवर तक आइडल है लैपटॉप को, खुद पावर ऑफ कर लो. अब ये जो इस तरह की कंडीशंस होती है ना, कि आई एम लाइक, अब ये देखो, अब आई हैव 2 कंडीशंस राइट नाउ. सो आई कैन से पावर ऑफ द लैपटॉप इफ either charging is less than 5%, or अब देखो the same, or idle for 1 hour, or the laptop is idle for 1 hour. So I might be like, okay, if it's either for, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट हो जाती है, just turn off the laptop. So when we are dealing with conditions, जब आपकी conditions आ जाते हैं, that part is basically addressed by the logic. Say that comes under logic. तो आपके लॉजिक्स 3 टाइप्स की बन सकते हैं. इट कुड बी डन यूजिंग एंड और नॉट. एंड और नॉट क्या होता है कि एक, अब ये जो एग्जांपल है, दिस इज और एग्जांपल. व्हाई इज इट और एग्जांपल? क्योंकि इनमें से एक भी कंडीशन मीट होगी तो जस्ट पावर ऑफ द लैपटॉप. इफ आई एम लाइक मे बी send message when send message, if let's say I am if I don't attend call and also, and अब देखो, and अब इसमें क्या बात आ गई, and I am also busy. I am busy. So if I am in a scenario where I am also busy and I am unable to attend a call, so I might be able to I might ask the computer to automatically send a message कि यार I will call you later. होते हैं ना अभी आप लोग देखो, in your new phones you guys have pre-written messages, सही, so you can directly send those pre-written messages. So अगर उसको मैं automate कर दूं, maybe take it to a next step, I can like maybe make it something like, हाँ मेटा का हो गया. अब देखो मैं उसको ना थोड़ा सा अगर इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊं, if I'm like tell the computer, if I tell the laptop or the phone already कि यार I am currently taking a meeting, I'm busy and so I won't be attending call, so you should automatically send a message. अब इसमें क्या हो गया, I have the condition, right? The condition is if I don't attend call and is an important part and I am busy, तो आपने मैसेज भेज देना है. तो अगर
I'm not busy, and if I don't attend call, तो उस केस में I won't be sending a message. So क्योंकि and वाला सीन आ गया, तो and means कि दोनों कंडीशन मीट हो, तो ये जो हो गया, ये हमारे पास and वाली कंडीशन मीट हो गई. और वाला ये मतलब है कि अगर एक हो जाए, not का ये होगा कि let's say if I give you guys a quick example, maybe something like कि हाँ चलो, if I'm like making a game, उससे ये उस गेम में ये है कि winner gets qualified if if his points are more than 30. तो अगर एक गेम में बना लेता हूँ, लेट्स से इट हैज सम टूर्नामेंट टाइप ऑफ थिंगी, जिसमें द विनर विल ओनली क्वालिफाई इफ हिज पॉइंट्स आर मोर देन 30. सो मैं उसमें एक इस तरह की इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ, लेट्स से आई टेल द कंप्यूटर कि इफ प्लेयर स्कोर इज नॉट 30, तो फिर मैं क्या कर दूं, रिमूव प्लेयर. सही है. सो अब ये यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, द कंडीशन इज दैट द प्लेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 30 और नॉट, बट द स्पेसिफिक वर्ड विच आई यूज इज बेसिकली नॉट. अब ये जो लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे ना, उसमें हमने यही एंड और नॉट ये चीजें पढ़नी है. बट आई जस्ट गिव यू अ क्विक समरी ताकि आप लोग को थोड़ी समझ आए कि अब ये कंप्यूटर में जब कंडीशंस की बात आ जाती है, लाइक एंड और नॉट वाली, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड बाय योर लॉजिक पार्ट. एंड जब आपने ऑपरेटर्स को डील आउट करना है ना, तो आप मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करे हो, दैट इज बीइंग डन बाय योर अरिथमेटिक पार्ट. सो इन दोनों चीजों को जब कंबाइन करते हैं, सो वी कम अप विद दिस थिंग कॉल्ड एज ALU. सो ALU और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ CPU. यहां पे लिख लेते हैं. It is the part of CPU that is responsible for carrying out arithmetic. आप इसी तरह लिखने जैसे मैं लिख रहा हूँ, से arithmetic and logic calculations such as, आगे एग्जाम्पल दे दो. Usually examiners do not want you to give examples, but if you have the space, why not, like दे दो. examiner ने मार्क तो नहीं काटना, right? But maybe जैसे मैंने उस दिन बताया था, if there is something vague, so you can, it's better to give some sort of example. At least it's better for the examiner कि आपको और अच्छे से समझ आए. And so such as carrying out addition or subtraction. So I'm like, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और आप लोग को एक्सप्लेन करूं, so I can be like, if age is greater than 18 or greater than 25, सही है, greater than 18 or greater than 18 and less than 30. Let's say if age is greater than 18 and less than 30, तो अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉजिक भी अप्लाई कर दिया, आई यूज दिस एंड वाली कंडीशन. एंड इसके बाद अब मैं ये कर लेता हूँ, स्कोर के अंदर मैं स्कोर +1 कर देता हूँ, लाइक आई एड 1 एक्स्ट्रा मार्क टू माई स्कोर. तो ये मैंने क्या कर दिया, आई डिड एडिशन, राइट? सो आई बेसिकली परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एज वेल एज लॉजिकल कैलकुलेशन. तो जब ये जो काम होता है ना, कि आपके कंप्यूटर में जो लॉजिक के रिलेटेड चीजें करता है या अर्थमेटिक के रिलेटेड चीजें करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज ALU. So this is basically your ALU, which is basically what it is, your arithmetic logic unit. आपके एग्जाम में usually they won't be giving you the full form. You should know कि ALU refers to arithmetic logic unit, but again we can talk about what the examiner might be testing. So you should be very well aware कि यार, when I'm talking about ALU refers to arithmetic logic unit. So आप लोग को ALU की समझ आई है या नहीं, guys? In the chat box quickly, everybody. Manal, Riyan, Saifullah, quickly. If you guys have some questions or do you want me to repeat it, let me know quickly. क्योंकि I want कि ये टॉपिक आप लोग का जितना स्लो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इतना ही आप लोग के लिए ये बेहतर होगा. माइक म्यूट? नो, इट्स नॉट. हाँ, आई नो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आप लोग को ये स्लोली समझ आएगा. अभी मैं किस तरह, अभी इसको ना मैं एक दफा फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर आप लोग को शायद बेहतर समझ आ जाए. लाइक लेट्स से, अब मैंने ना कंप्यूटर के ऊपर डेफिनेटली आई वांट इट टू डू सम थिंग्स, राइट? अब क्या चीजें मैंने करनी है, दैट्स द क्वेश्चन. लेट्स से अब आई एम इन अ सिनेरियो, वहां पे इफ आई एम लाइक, ओहो रुको, आई लेट मी मेक इट लाइक दिस एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. ये
Oh, yeah, guys, just a moment, sorry. So, yep, back to AB1. So let's discuss the whole scenario with some other example too. Say, what is ALU? ALU is something within the CPU. CPU ke? CPU is the brain of your computer, right? It's the brain of your computer. ALU is one part of your brain which is basically associated with dealing operators and conditions. So agar let's say I'm here telling you, K Rayan, we definitely have a brain up here, right, in our heads. Now the brain might be dealing with many different things. It has connections to how you move the body, how you talk, how you make decisions, how you do these mathematical thingies, how you have conditions and all that. So the same thing applies to your computer. जो आपका सीपीयू है, सीपीयू is just like the human brain. सही? So when it's just like the human brain, the thing is जो आपके human brain के अंदर the capabilities which basically performs conditions and operators वाले tasks, maybe if I'm like I ask you what is 10 multiplied by 2, so your brain will directly tell you it's 20, right? आप लोग को पता है. But this, let's say if this is your big brain, सही है, इसमें it can deal with multiple things. इसमें जो एक part है, maybe this one part which allows you to perform such calculations, ये part basically is known as ALU. So ALU आपकी ये perform करते हैं calculations such as 10 multiplied by 2 या 10 plus 2 या फिर 10 minus 2 या anything that is related to operators. सही, operators का मतलब mathematical conditions. At the same time ALU के अंदर एक और खासियत भी है, and वो खासियत इस तरह है कि if I'm like, bro, if I get late then you might eat dinner. तो जब मैं अपने भाई को, अगर मुझे कोई बोले, अब सही है, अगर मेरा भाई आता है, he goes to play football, okay, and he tells me that, bro, if I get late then you might be then you might have your dinner. Might be क्या लिख रहा हूँ, then you might have your dinner. So if he tells me that if I get late from like let's say 9:30, तो आप लोग dinner करते. So अब ये क्या हुआ? I got a condition, right? The moment it's over 9:30, I know my mind tells me, okay, now I have the permission to have dinner. Now, how does my brain know that? That's a question. अब सेम टू सेम मैकेनिज्म को अगर मैं कंप्यूटर में अप्लाई करूं, सो जो ये वाले सवाल का जवाब आपके जहन को जो पॉइंट बताता है ना कि नाउ यू कैन हैव डिनर, दैट इज आल्सो गिवन to the computer by your ALU. So your ALU performs mathematical, remember अगर simple अल्फाज में बताओ, it performs mathematical as well as conditional instructions. So when you get something which includes conditions or whether it includes something related to maths, तो जो ये दो चीजों को डील करते हैं ना आपके कंप्यूटर की सीपीयू में, जो इन दो खातों को डील करते हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस एंड कंडीशनल कंडीशंस, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, कि लाइक अगर ये होता है तो आई शुड डू दिस, इफ आई प्रेस कंट्रोल जेड then it should undo what I did this इससे पहले, if I press alt control delete it should turn off the whole thing. अब ये conditions ही है ना, type of whether alt control delete has been pressed or not. If it's not pressed तो it should run, if it is pressed turn off everything. So ये जो सारा mechanism है ना, ये जो सारा कुछ कंप्यूटर के माइंड में ये चीजें जो डील करते हैं ना, that is basically called as ALU. So ALU is a part of your brain. And what's the brain in the terms of computer? This is your CPU. So remember, जब भी मैं CPU की बात करूं, just refer to your own human mind. अब आपके माइंड के अंदर ये मल्टीपल चीजें हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि your computer runs in the right way. One that part is known as ALU, जो कि आपका क्या डील करता है? It deals your mathematical and conditional instructions. So is it somewhat better explained now? And is it clear? Rayan, Saifullah, Manal, and everybody else, quickly in the chat box. नहीं समझ आई तो कोई नहीं, फिर से बता दो, मैं फिर से दूसरे एग्जांपल से बता दूंगा. Manal and Saifullah, good. Manal, can you also let us know whether it's clear or not? If it's not and you want me to re-explain it, बता दो. There is no need to worry. We need to take the topic slow because I know this is boring. And यही चीज अब जैसे मैंने आपको ALU का बता दिया, अगर एग्जाम में आ जाता है तो just quickly refer to your brain कि okay, it's something within my brain which is responsible to arithmetic and logic calculations. Great. So सबका clear हो गया. Let's move on. Now we have discussed one part.
What is that one part? It is related to ALU. But we need to discuss three main things. The second part which you need to discuss is basically known as the control unit. So control unit by the word should also give you a hint. KR, it is sort of a headquarters within our brain that is dealing with what? Controlling people, controlling my mind, controlling the whole computer. So if I'm like, maybe my brain is, let's say, a big company. अब company के अंदर we might be having 100 employees, but at the top there is one person who is known as, yeah, it's also part, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, this comes under your CPU. सही है? So एक second, it is part of your CPU. एक second, I just had a question. हाँ सही सही सही, सॉरी यार, एक तो I don't know what happens, but chalo. Ab control unit क्या है? This building is your CPU. Okay, this is, let's say, your very big CPU. उसके अंदर you have 100 employees. 100 employees might refer to all these other things which are there in your brain. ALU might be one thing. Maybe ALU is one employee, for instance. But at the top of every company or organization, you might have someone like a CEO or a president, right? So अब ये president या CEO क्या होता है? He is the person who has the most power. He is the one who is giving instructions. He is the one who is basically leading everyone. He is motivating everyone कि यार सब काम अच्छे से करो. अब जब आपके ह्यूमन ब्रेन या कंप्यूटर ब्रेन सीपीयू के अंदर जो आपका लीडर होता है ना, द वन हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस, द वन हु इंश्योर्स कि एवरीवन इज वर्किंग वेल, द वन हु इज गिविंग कमांड्स टू डू दैट, ये जो बंदा कंप्यूटर के वर्ल्ड में होता है ना, inside your CPU, that is basically your control unit. So control unit short form is CU. Maybe in the exams they write the word CU, so do know CU refers to what? It refers to your control unit. अब control unit करता क्या है? Control unit में ना एक चीज है, it firstly सबसे पहले control unit has the power of, or I can say it has this ability to read an instruction from memory. So let's discuss this. सबसे पहले लिख लेते, the CU, I will be referring to control unit as CU. So do know CU refers to control unit. So the CU reads an instruction from the memory. So what do I mean by this? Basically, if I want you to perform a calculation, क्या 10 plus 2 क्या है? 10 plus 2 is what? That's a question, right? So this 10 plus 2, before I get the answer, the answer is 12, this basically goes to my brain and it gets in a waiting list. So मेरे brain के अंदर एक wait list होगा. सही, we are going to discuss that. इस wait list में this question is gonna go. Say this question will be up here in the waiting list. तो जो वेटिंग लिस्ट से एग्जीक्यूशन के लिए आता है ना, कि लाइक लेट्स से if I'm telling every one of you, okay guys, you need to send me questions which you want to ask बारी बारी, सही है, one by one. So एक बंदा बताएगा मुझे, मैं उसको जवाब दूंगा, फिर दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की बारी आएगी. The same process is repeated by the computer, सही है. So I send in these questions and instructions and ये बारी बारी एक एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है. अब ये इंस्ट्रक्शन जाके किसी पॉइंट पे स्टोर हो जाती है. अब उस पॉइंट से दिस वेटिंग एरिया, let's call this wait list, okay, waiting area is better. If this waiting area के अंदर मेरा क्वेश्चन आ गया, यहां से लेकर अब आके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, and what is executing this? अब ये मुझे ये बताए, if I have this question, who will be executing it? It will be the ALU, right? ALU is dealing with operators and all these stuffs, जहाँ पे addition हो रही है, subtraction हो रही है. So this thing has to be dealt by ALU. So waiting area से the question going to ALU for execution, ये जो आपने ये जो step करना है ना कि let's read या call the next question for execution, that is first and foremost work of a control unit. So your control unit reads an instruction. Remember, whenever I say instruction, computer science के world में instruction is any action. Whether if I'm saying like print this document, this is one instruction. If I'm like typing H को मैं टाइप करते हुए जो मैं बटन प्रेस करते हूँ, that is an instruction. Me writing this word H up here, अब ये ग्राफिक टैबलेट के ऊपर किस तरह हुआ है? I press the pen onto the graphic tablet and due to the pressure and whatever the mechanism behind that is, आपके कंप्यूटर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया. This is an instruction. Me opening Google Chrome and opening the Google Meet session, that is an instruction. So ये जितने instruction को read करते हैं ना from the memory in this case is basically your waiting area. यहाँ से जो
इसको रीड करने वाला काम है, दैट इज डन बाय योर कंट्रोल यूनिट. अब जब एक दफा इसको रीड कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली आपके ना इस प्रोसेस में एग्जीक्यूशन हो जाती है. सही, वी आर गोइंग टू बी studying the whole process. Let's refer to that as process now. So I process the instruction. I process the instruction. So matlab in simple words, if I'm doing 10 plus 2, so I'm processing it now, right? So 10 hoga, फिर then I have plus, so this means I need to add 2 into 10, so it is going to be 12. So ये जो सारा processing है, which is done by other stuffs like maybe ALU या whatever other parts we are going to be studying. So जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ये इसके बाद होगा. सही है. सो कंट्रोल यूनिट ने प्रोसेस नहीं करना. कंट्रोल यूनिट नीड्स टू गेट द डेटा, needs to read the instruction, उसके बाद वो process होगा by specific components maybe like ALU. But during the processes we have signals being generated. Let me write it and फिर मैं details explain करता हूँ. Signals being generated to tell other components in the computer. I know this is a bit confusing, लेकिन ये हम slow और detail से करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी. Other components in the computer, what to do. So remember मैंने सबसे पहले क्या बोला है कि your control unit is type of CEO or the president. So if I'm the CEO of a company, definitely it's my work to tell people कि like let's say now you all are let's say working under me in a company. And Rayan को मैं एक काम दे देता हूँ कि Rayan, you need to let's say we are a restaurant, we run a restaurant together, right? So now Rayan is basically the cook. Okay, Rayan is the cook and he's like cooking biryani for us. I love biryani, by the way. So I will again and again give biryani examples. So Rayan is cooking biryani, but there is an issue. Rayan is like, yaar, there is no what do we call it, chicken left in the refrigerator, so how will I be cooking biryani? So up see you, I'm the CEO, right? I'm the founder, so I'm the control unit right now. I'm at the top one. I need to tell others what to do. So now I know कि यार chicken nahi hai, so there a signal has been generated. So a signal has been generated telling me that there is a lack of chicken. Now I will be telling Manal. So I will be sending a signal from my office. Yeah, in terms of computer, अब computers में तो orders नहीं है ना, so it's all circuits. So circuits में तो electricity होती है, तो signals होंगे. So I send a signal, and this signal goes through those wires जो हम आगे पढ़ेंगे, and it goes to Manal, and Manal को बताती है कि like let's say Manal is one other component that you need to go and bring chicken in. So a signal is being generated to tell other components in the computer what to do. So just like that कि अब CU किसी instruction को read करता है, and let's say that instruction maybe requires some other component to work. Maybe if I'm like let's say, okay, let me give you one other example. If I'm like playing some audio, so I press the button on my screen, right? Pressing से आवाज तो नहीं आनी चाहिए, right? It is I'm asking the computer to run a file, so it runs the file and वो तो चल जाती है. But how does the audio come out of my speaker? So जो आपका control unit होता है ना CU, it reads this instruction कि let's open up this audio file, and फिर उसके बाद that file is being processed by other parts, but during that process signal generate हो जाता है, and that is generated by your CU, and it tells the computer कि यार go tell the speaker to play this audio. So the speaker basically gets a signal to tell, and it tells the speaker basically to play that specific audio. So ये मैंने आपको बहुत सिंपल अंदाज में समझाया है कि जब आप किसी चीज को एग्जीक्यूट करते हो ना, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपके एक सीयू का एक एक्स्ट्रा काम ये होता है कि शायद ड्यूरिंग प्रोसेस के एग्जीक्यूशन आपके सिग्नल्स जनरेट हो, एंड वो जब सिग्नल्स जनरेट होते हैं ना टू टेल अदर कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये जो काम है दैट इज आल्सो बीइंग डन बाय योर कंट्रोल यूनिट. अब इस दौरान एक और कहानी भी आ जाती है. मे बी व्हेन आई एम सेंडिंग सिग्नल्स आई नीड टू मेक श्योर कि यार टाइम का ख्याल रखा जाए. व्हाट डू आई मीन बाय टाइम का ख्याल? मे बी ऐसा ना हो कि यार जो हम पैकेट्स वाली कहानी पढ़ रहे थे, रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 2 वी वर टॉकिंग अबाउट दिस होल स्टफ अबाउट हाउ मे बी द पैकेट गेट्स लॉस्ट और मे बी इट्स डिलेड और स्टफ लाइक दैट. But when dealing with computers, we don't want delay. We need to make sure कि stuff is working in the right manner in the right time. So इसके लिए we need to ensure कि the control unit का जो यहाँ पे ये जब signals बनते हैं ना,
तो कंट्रोल यूनिट की एक ड्यूटी होती है एज द प्रेसिडेंट of my company. It is my work. Okay, if I'm, let's say, asked to make biryani for someone, I should make sure that the biryani is made within the right time. So कंट्रोल यूनिट का एक काम होता है which is really important. अब ये तो जनरेट होंगे सिग्नल्स कि यार अब रियान ने बोल दिया guys we don't have chicken with us. So that's a signal being generated and that signal goes to Manal कि यार you need to bring what chicken for the cooking of biryani. But what's my duty as the president or as the control unit? So my work basically at this stage is that I will ensure synchronization of data flow. I'm explaining the word synchronization, don't worry, of data flow and program instructions throughout the computer. And program instructions throughout throughout the computer. What do I mean by this? Let's say I'm like, okay, I'm the founder, right? I'm the president type of your CEO. So I will be like, how will I ensure synchronization? Synchronization basically means कि I set up an audio call, making sure कि यार जो data flow हो रहा है या जो भी काम हो रहा है, that is being done in the right way, in the right time. ऐसा ना हो कि मैं ये बोलूँ कि मनाल गोस एंड गेट चिकन एंड इतना टाइम लग जाए कि यार बंदा ही आ जाए कि भाई मेरा ऑर्डर किधर है. सो आई नीड टू इंश्योर कि सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब, या फिर ऐसा ना हो कि मनाल गोस एंड वो चिकन ले पीछे लेट्स से रेयान ने कोई प्रेपरेशन ही नहीं की अबाउट कुकिंग. So to ensure this thingy, हाँ exactly, synchronization basically means in very simple अल्फाज कि यार जो कुछ हो रहा है ना वो टाइम के मुताबिक परफेक्टली अपने अंदाज में हो रहा हो. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इफ आई एम लेट्स से दिस कंट्रोल यूनिट, I might call Rayan and Manal at the same time. I'm in my office, I have a call with them. I'm like, Manal, let me know quickly, where are you standing right now? आप कहाँ पे हो? How much time will it take for you to reach back to the office or the restaurant so that we can start with the work? At the same time, I will be telling Rayan, okay, Rayan, she will be here in 3 minutes. In 3 minutes, you should make sure that all the tomatoes and onions have been chopped down and we have already added the oil and everything so ताकि उस पे time ना लगे. अब what just happened? We just made sure that everything that by the time Manal comes in, हम directly सिर्फ chicken add करें. So everything has been ensured and वो synchronized हो गया. If I tell you guys the exact definition of synchronization, let me check it on the Google. Synchronization. Oh, I've already searched it ago. So synchronization basically means the operation or activity of two or more things at the same time or rate. So in simple alfaz, अब मैंने क्या किया? I synchronized, I ensured that Rayan is chopping those tomatoes and onions and at the same time इन द करेक्ट. हाँ, अब रेयान अपनी टाइम के एक ही टाइम के अंदर लेट्स से एक ही मौके पे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग द चिकन, Manal is getting the chicken, right? But at the same time, what's happening? Rayan is chopping tomatoes and onions. वो भी अपनी जगह पे हो रहे हैं, दोनों खाते एक टाइम के अंदर क्लियर आउट हो रहे हैं एंड दोनों सही ऑर्डर में भी हो रहे हैं. सो व्हाट जस्ट हैपेंड, आई जस्ट इंश्योर्ड कि एवरीथिंग इज बीइंग डन इन द राइट करेक्ट मैनर. सो इस प्रोसेस को भी जो ओवरलुक करता है ना कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो हो रही हो, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली हो रहे हो, इस सब को भी आपका कंट्रोल यूनिट ही चेक करते हैं. सो कंट्रोल यूनिट की एक ड्यूटी होती है कि आप जब कोई इंस्ट्रक्शन या कोई चीज इस तरह का खाता हो जाए कि लेट से हमारे पास अब ये इंस्ट्रक्शन वाली बात आ गई कि सिग्नल जनरेट हो गया, राइट? तो अब उसको इंश्योर करना है कि यार कोई चीज में डिले ना आ रहे हो, ये भी आपका कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है. एंड फॉर दिस कि सब कुछ टाइम के अंदर हो, कि लाइक कोई चीज डिले ना हो. लाइक व्हाट डू आई मीन बाय डिले, मतलब अगर अब मैं अब इसको ना देखूं कि आई नीड टू गिव द ऑर्डर टू द पर्सन बाय 5:30. If I don't look at the clock, definitely there is a high possibility if I'm like just laying up like this and I'm like, okay, yaar, ab तैयार हो जाएगा. And I'm not looking at the clock and not seeing whether Rayan is spending more time or Manal is taking a lot of time to get the chicken. तो बड़े मसले हो सकते हैं. So to ensure this problem doesn't occur, control unit के एक third काम भी होता है. So I'm telling you, this was the first काम, this is the second work control unit does, and now we are going to be doing the third thing जो कि control unit एक और काम करती है. Control unit is used to basically it produces timing signals. So it produces timing signals. Let me write it and फिर हम explain करते हैं. So it produces timing signals that ensures this vital synchronization
synchronization, and it makes sure that it it makes sure that the computer does not crash. Computer does not crash. अब ये हमने क्या बोला? अब लेट्स से व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द सेम एग्जांपल, इसमें हमने एक बात की है ना कि मनाल लेट ना हो जाए या रेहान कुकिंग पे इतना टाइम ना लगा ले कि यार बंदे ही आ जाए, ही इज आस्किंग फॉर बिरयानी. So what I do is that I'm telling you guys you need to complete this in 5 minutes. So if Manal is leaving the restaurant, I give her 5 minutes. Dude, you have 5 minutes to complete this. So I'm producing what? I'm type of producing timing signals. And on timing signals का क्या काम होता है? It is to ensure that this synchronization occurs perfectly. So at the same time, I'm also giving Rian 5 minutes. Okay, Rian, you have 5 minutes to ensure that all the onions and tomatoes have been chopped correctly. So within 5 minutes, we have the chicken, we have all the tomatoes and everything chopped off. तो हमारा सब कुछ बड़ा proper अंदाज में हो रहा है. And this basically ensures that the computer does not crash. In our example, crashing basically means failure, right? So this means failure. And what is failure? Failure is basically कि यार अब बिरयानी टाइम पे नहीं बनी तो I will say कि यार it's a failure for us. So अगर कंप्यूटर किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर टाइम के अंदर अपने एग्जीक्यूशंस ना कर पाए, so computer crashes. What do I mean by crashes? Crashes computer के world में it means when your software does not work, it does not respond. वो आपके पास आ नहीं जाता not responding. What is that not responding? That not responding basically means that if I ask the computer to do this thingy in इतना time, and उस दौरान वो इतना काम नहीं कर लेता, maybe my computer is slow. So आपका computer slow हो जाता है, it get hangs, it gets stuck. Exactly. जब का आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है या आपका कंप्यूटर स्टक हो जाता है तो वो आपके पास आ जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग. अब वो नॉट रिस्पॉन्डिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट कि मैंने इतनी चीजों को काम दे दिया कि उनको मैं वो कम टाइम के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर ही ना सके. एंड क्योंकि उन्होंने टाइम के अंदर काम कंप्लीट ही नहीं किया, आपकी सिंक्रोनाइजेशन सही तरीके से हुई ही नहीं है. जब आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई तो योर कंप्यूटर जस्ट क्रैश्ड ऑफ. एंड सो व्हेन इट गेट्स क्रैश्ड यू आइदर हैव a stuck screen or maybe you get that error code के not responding, close everything. या फिर अगर कोई मेरी तरह हो and both ही stuck हो जाता है, so if you're on the laptop आपने power off button को press रखना है for 20 seconds so that it completely goes off. So अब ये जो चीज है इसको ओवरकम करने के लिए कि यार आपका कंप्यूटर क्रैश ना हो, आपके जो कंट्रोल यूनिट है that produces these timing signals just to make sure कि यार किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई मसला ना बन जाए, कि यार सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर्ली हो रही हो, कि कोई कंप्यूटर क्रैश ना हो जाए या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो ये तीन स्टफ जो है ना ये आपके कंट्रोल यूनिट डील करती है. अब कंट्रोल यूनिट के आपको बस ये पता होना चाहिए, कंट्रोल यूनिट से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट डू, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंट्रोल यूनिट रीड्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. सही है. फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि कंट्रोल यूनिट्स also ensure synchronization of data flow and program instruction throughout the computer when signals are being generated to tell other components in the computer what to do. And finally आप एक ये बात भी बता सकते हो if asked कि like control unit produces timing signals that ensures that the synchronization whole takes place properly and so that there is no sort of data being crashed. क्योंकि आपने कंप्यूटर को क्रैश तो नहीं होने देना, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? If I just want to give you guys a control unit के काम तो हमने discuss कर लिया, my bad. If I want to define control unit in one line or one sentence, it will be a component within the CPU that directs the operation of the processor. So what does this mean? It directs the operation of a processor. अब ऑपरेशन से क्या मुराद है? ऑफ द प्रोसेसर का ऑपरेशन ये है कि देखो हम आराम से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब कुछ टाइम पे हो रहा हो, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा, कोई मसले तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये जितनी चीजें हैं इनको ओवरलुक करने वाले क्या चीज है? इट्स योर कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट आप लोग को समझ आई है या नहीं? आप इस कंट्रोल यूनिट एंड ALU क्लियर और नॉट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली. ग्रेट, रेहान को आ गई है. अब बाकी बताएं. सैफुल्ला एंड मनाल एंड एक सेकेंड, बाकी कौन कौन है? आप लोग भी जल्दी जल्दी बता दे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आई विल बी आस्किंग ओके ऑल्सो ओवर द वीकेंड इंशाल्लाह आफ्टर टुमारोज क्लास आई विल बी पोस्टिंग वन टाइप ऑफ असाइनमेंट
you want, like, let's call that an assignment for chapter number 1. You guys can openly पहले आप अच्छे से questions को देखने तो नहीं है, definitely you should just go revise the topic and try to solve that worksheet. I will be marking that, by the way, but I want you guys कि आप Saturday Sunday जब भी free हो, it's no nothing, by Monday or Tuesday आप लोग ने वो Google Classroom या LMS हमारे पोर्टल जहाँ पे भी आप अपलोड करते हो आपने अपलोड करनी है, but that is a type of test जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ले लूँ ताकि आइडिया तो हो कि guys, are you guys preparing well or not, because together we need to ace the exams. Remember, acing the exam is our very first priority. So अब हमने ये दो चीजें पढ़ ली है, ALU भी समझ आ गए, CU भी समझ आ गए. We have 5 minutes. I want to discuss one more thing and let's end up the class. You guys have heard the word RAM, right? So when getting a computer, we always, if you're someone who loves playing game like Rayan, आप बार बार बोलते रहते हो, let's have games and stuff like that. You would definitely know stuff like this computer has 16 GB RAM. And what type of RAM does it have? It has a DDR4 RAM and all that. But जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं, we discuss RAM. But what is RAM? That is really important. So RAM basically refers to random access memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो इसमें होता क्या है कि अब जब मैं ये बोलता हूँ ना कि ये जो वेटिंग एरिया की मैं बात कर रहा था, वेटिंग एरिया, अब वेटिंग एरिया इज बेसिकली माय हार्ड डिस्क. सो माय हार्ड डिस्क हैज द फाइल, राइट, बट व्हेन आई वांट टू एग्जीक्यूट द फाइल आई ब्रिंग इट टू वन अदर प्लेस. दिस प्लेस इज बेसिकली रैम. सो आपकी जितनी चीजें अभी currently रन हो रही है ना, like if you are taking this class on a laptop right now, if I'm talking about my example, so I have the Google Chrome browser running, I have this note taking app open, I have other stuff open on my phone, on my laptop. तो ये जो चीजें रन हो रही है ना, this is basically stored in some memory location that is known as RAM. So when I want to execute something, like ऊपर हमने ये example discuss की ना कि प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, तो इस दौरान जो चीजें हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्लेस इन द कंप्यूटर जहां पे मैं क्विकली जगह चीजों को स्टोर कर सकूं एंड क्विकली ले सकूं. सो दैट प्लेस इज बेसिकली योर रैम. सो रैम के अंदर वी बेसिकली स्टोर all the data. This is the very exact definition. See, stores all the data that is currently being processed. Currently being processed. So अगर आप लोग कभी वो ओपन करो ना अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, what do we call it, task manager, or if you're on what do we call it, Mac, तो उसके ऊपर आपके पास आता है यार अब यहाँ पे let me open it up. No, it's not like a memory card. It's like a RAM is type of a memory placed within the computer. It's not a part of CPU. Okay, this is not in CPU. This is not in CPU. Again, this is important. RAM is one extra thing जो आप कंप्यूटर के अंदर लगाते हो. उसके अंदर एक खासियत है, RAM is very fast. It is very fast. सही है. RAM के अंदर RAM allows you to perform calculations and all this transferring of data in a very faster way. So when I have a ALU up here in the CPU, this is CPU. सही है. I have ALU up here and maybe I have control unit up here and I want to execute these two things. लेकिन I also need some memory place up here जिससे मैं जल्दी जल्दी डेटा इधर भी ट्रांसमिट कर सकूं, इधर भी ला सकूं, इधर भी ला सकूं. बिकॉज रिमेंबर कंप्यूटर ने हर चीज बहुत नैनो सेकंड्स के अंदर करनी. सो व्हेन आई वांट टू डील एवरीथिंग इन वेरी वेरी फास्ट वे, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए जो तरीका है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कि जो माय मेमोरी होनी चाहिए ना, दैट शुड बी समथिंग वेरी फास्ट. सो अगर मैं 1 सेकंड के अंदर 10 चीजें इधर उधर भेज सकूं, सो दैट हेल्प्स मी, राइट, रादर देन इफ आई हैव there might be a question in your mind कि why do we need RAM when we have something like hard disk? Like आप लोग के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होते हैं ना, हार्ड डिस्क which is of like maybe 512 GB. अब ये 512 GB के अंदर भी तो डेटा स्टोर होता है, रैम के अंदर भी वही डेटा स्टोर होता है जो हमने करना होता है. बट द थिंग इज दिस हार्ड डिस्क इज वेरी स्लो. It is way slower to RAM. So when we want to execute something, what happens is that we take data from hard disk, we take the data to memory. And फिर memory, जो ये वाली memory है, that is basically known as RAM. So whatever we are trying to process at any moment, like right now I'm writing this note, right? I'm making these notes. So I'm processing it on these notes app. जो भी मेरे notes का app है, this good notes app, इसके ऊपर मैं process करूँ, right? So currently all the data related to my graphic tablet जिसको मैं use करूँ, related to this good notes app, related to Google Chrome, it is currently being stored on your RAM.
सो रैम के ऊपर आपके मेमोरी की वो चीजें स्टोर हो रही थी जिनको मैंने फॉरन एग्जीक्यूशन में लाना है. बट इफ देर इज समथिंग, ओके मनाल, I'm just ending it up right now. But अगर at the same time we have something like a hard disk, तो वो काफी slow है. तो मैं तो कहता हूँ let's end it up till now. We are going to discuss RAM कल फिर डिटेल में, इसको प्रॉपर से कल फिर कर लेंगे. मैंने कहा हो जाएगा, बट चलो let's do it tomorrow. That was all for today. Allah Hafiz. If you guys have any questions regarding RAM, ko chhod do. We will discuss RAM again tomorrow, inshallah. Do you guys have any questions regarding control unit या फिर arithmetic logic unit? तो आप लोग मुझे बता दो. बाकी चीजें inshallah we are going to be studying in great detail from tomorrow, inshallah. If not, you guys can leave, and that's the end of today's class, inshallah. And Rayan, अगर आपकी कोई questions नहीं है, तो you can also leave. Let me just end up the recording. End the recording.